अच्छा, so the next topic we'll be doing is Bernoulli's theorem. ठीक है? So now ये Bernoulli's theorem क्या सिखाएगा हम लोगों को? ये सिखाएगा कि velocity or the pressure of liquid and the height or position of the liquid, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है? अब तुम बोलोगे सर ये पढ़ने का जरूरत क्या है? The reason is हम लोग ये बहुत बार सुने हैं कि जब भी हम लोग को बोला जाता है कि you go to train stations, you should never go close to the line when the train is approaching at a very high speed. Why? Because it creates a suction force towards itself. क्यों? जहाँ से ट्रेन जाता है वहाँ स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसके साथ हवा को भी खींच के लेके जाता है. So it creates an apparent vacuum over that region. तो वो तुम्हारे पीछे जो एयर है वो एयर वहाँ पर रश करने का कोशिश करता है. So it basically gives you a pushing force from your back towards the train. तो अगर तुम ट्रेन का बहुत नजदीक होगे, it will just suck you into it and you might get an accident. Do you understand me? So ये this is অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় ছোটখাটো, কিন্তু সেটা অ্যাভয়েড করাটাই ইজ বাঞ্ছনীয়, তাই না? আদারওয়াইজ আমরা কারণ ইচ্ছে করে জেনে পড়ি. So have you observed that whenever there is a storm coming, that means there is a prediction for storm, they near the coastal areas they pull up the people that are staying in small hut or small thatched roofs. Why? Because thatched roofs जो होता है ना, जब wind blow करता है, the thatched roofs gets blown away. ठीक है सर? The next thing, why does aeroplane needs a runway? Why does an aeroplane need a runway? क्या पुश करने? सर मोमेंटम बहुत जरूरी ना, लिफ्ट और to get the wind speed. To get the wind speed एट जो रनवे, नॉर्मल रनवे जो होता है एयरपोर्ट्स में वो बहुत लंबा होता है, बट जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो वहां पर एक शिप के ऊपर इतना सारा एरोप्लेन होता है और वो वहां से टेक ऑफ करता है. वो कैसे कर लेता है उतना छोटा रनवे में? नाइट जैसा नहीं है, हाँ ऐसे हो जाता है, लेकिन उसको तो उतना विंड स्पीड चाहिए, नहीं तो वो चढ़ेगा कैसे? इसीलिए द शिप स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड फर्स्ट and then the airplanes take off. They don't attain so much velocity. पहले शिप जो होता है वो ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर लिया होता है, उसके बाद एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, तो उससे क्या होता है छोटा रनवे वजह से भी उसको जितना एयर स्पीड चाहिए होता है वो एयर स्पीड मिल जाता है. बट द क्वेश्चन इज व्हाई डज इट नीड द एयर स्पीड? बिकॉज़ वो एयर स्पीड से ही उसको लिफ्ट मिलता है, अपलिफ्ट, और उससे ही वो टेक ऑफ कर पाता है. अगर कोई भी प्लेन का एयर स्पीड घट जाता है ना तो वो नोज डाइव करेगा, सीधा नीचे गिर जाएगा अगर एयर स्पीड घट जाता है. सर अगर वैक्यूम होता तो प्लेन नहीं पाता, कभी नहीं. वेल ইঞ্জিন চালানো হতো মানে আরে উড়বে না কি করে? ডাউনওয়ার্ড বুস্টার লাগবে, তাহলে গ্র্যাভিটিকে ওভারকাম করে যেতে পারবে. হ্যাঁ, যদি গ্র্যাভিটি ফ্রি স্পেস হয় তাহলেও যেতে পারবে, যে কোনো বুস্টার পেছনে দিলেই যেতে পারবে. কারণ স্পেসে তো আমরা রকেটটা করে উড়াচ্ছি তো। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে ইট ডাজন্ট টেক দ্য হেল্প অফ উইন্ড. अच्छा सर लैंडिंग के बाद वो लोग पैराशूट भी खोल लेते हैं बीच में, तब जल्दी रुक जाएगा, छोटा एरिया में ही रुक जाएगा. Well, let's come back. जो बोल रहे थे ध्यान से. ड्रीम 11 में हार गए. Well, so again we are coming back to the similar situation. एक changing cross sectional area है at different elevations. Say we take a particular place horizontal and say the initial point is at a height of h1 from the horizontal level and the final place is at a height of h2 from the horizontal level. ठीक है? Same thing यहाँ पर velocity of liquid coming inside is v1 and area of cross section जो है वो a1 है. यहाँ पर area of cross section a2 है and the velocity of liquid which is coming out is v2. Clear?
So we need a relation between the height, velocity, and the speed. Height, velocity, and the elevation. Elevation and elevation means the height. Height, velocity, and pressure. Pressure. Say the pressure of liquid at this point is P1, and the pressure at the liquid at the second point be P2. ठीक है? A section of a fluid flowing through a non-uniform. जल्दी से लिख लो quickly. A section of fluid flowing through a non-uniform cross-section pipe. Non-uniform cross-section pipe is taken. The values of velocity, area of cross section, pressure, and elevation at any one point are V1, A1, P1, and H1 respectively. The similar quantities at any other point V2, A2, P2 and H2 respectively. So क्या लिखा मैंने? एक बार पढ़ देते हैं. I've got a very poor handwriting. A section of a fluid flowing through a non-uniform cross-sectional pipe is taken. मतलब ये जो पाइप दिया हुआ है, it's a section of a fluid flow, not the whole fluid flow. इससे पीछे भी कुछ fluid है और इसका आगे भी कुछ fluid है. हम लोग सिर्फ एक section लिया हुआ है, ठीक है? उसमें the values of velocity, area of cross-section, pressure and elevation. मतलब ये velocity at this point is V1, area of cross-section is A1, the pressure of liquid at this point is P1, and the elevation means height from a certain horizontal level is H1. The similar quantities at this point are V2, A2, P2 and right. Now, since we are dealing with, since the fluid is ideal, hence ideal fluid कतो बार बोलना ideal fluid बोला है जिका incompressible and non-viscous. ठीक है सर? If it is non-viscous, we can apply the conservation of energy principle. So for a fluid is ideal. Since the fluid is ideal, hence energy is conserved. Energy is conserved. ठीक है? अब तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है पहले ये समझो ध्यान से. यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है. मान लो आई एम टेलिंग यू कि प्रेशर P1 जो है वो P2 से ग्रेटर है, तो इधर से धक्का बहुत जोर से पड़ रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर राइज कर पा रहा है. इज दैट क्लियर? यस सर. अब ये जो P1 प्रेशर के कारण यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स कितना है बताओगे? At the first point, force क्या होता है? Pressure is equal to force per unit area, right? So force is equal to pressure into area. हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे बोलो एक चीज, P1 into A1 फोर्स है और in a small interval of time t,
displacement at first point is कितना होगा बताओ? फ्लूइड का वेलोसिटी कितना है यहाँ पर और t is the time, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v1 into t, हाँ या ना? v1 into t। अब मुझे बताओ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या देता है हम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट। हाँ সেটা তো not chilish कर Therefore, work done due to the pressure at first point is what হবে? Work done is force into क्या मालूम है? work done is force into displacement होता है? नहीं। तो ये फोर्स है और ये V1 into V1, right? Yes, sir. Now tell me the same thing at the second point. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से। ये जो प्रेशर था, ये फोर्स, this portion of liquid was getting this pressure from the liquid which is present behind it. वही तो उसको धक्का दे रहा था ना। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में था। पर यहाँ पर जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? जैसे मान लो ऐसे तीन बॉडीज हैं, यहाँ पर हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो ये वाला अगर मिडिल वाला बॉडी को सिस्टम लेंगे तो ये पीछे वाला बॉडी किधर फोर्स अप्लाई करेगा? आगे, और आगे वाला बॉडी पीछे, isn't it? तो ये जो हम लोग फ्लूइड सेक्शन कंसीडर किए हैं, इट इज लाइक द मिडिल ब्लॉक। इसके सामने भी फ्लूइड है, पीछे वाला फ्लूइड सामने वाला डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है और सामने वाला फ्लूइड राइट। तो यहाँ पर जो F2 है ना, वो डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। किसका ऑपोजिट में? डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में। सो डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में अगर फोर्स होता है तो वर्क डन कितना होता है बाय द फोर्स? राइट। सो वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर at second point is minus V2 A2 V2B. Agreed? Agreed? Yes, sir. Right. So therefore net work done is equal to P1 A1 V1 T minus P2 A2 V2T. Right? Now tell me, equation of continuity क्या देता है हम लोगों को? Right, equation of continuity says A1 B1 is equal to तो क्या हम लोग ये जो A1 B1 T और A2 B2 T है, ये A2 B2 को हम लोग A1 B1 में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो I can write this as A1 B1 T taken common P1 minus P2, हाँ या ना? P तो दोनों में सेम था, सिर्फ A1 P1 के जगह A2 B2 के जगह में मैंने A1 Is that clear? सोनी कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सेটা পরে আসছে এনার্জি কনজারভেশন প্রিন্সিপল will come to it, but before that kinetic energy at the first point. How do you calculate the kinetic energy? It is half m v1 square and kinetic energy at second point will be taken as half m V2 square. v2 square. Okay? Yes. So therefore change in kinetic energy delta k half m v2 square minus right, that will be the change in kinetic energy. Yes or no? Similarly, what will be the potential energy at first point?
MgH1 mgh1 and potential energy at second point is mgh2. Yes or no? Okay, now there is a small giving a small application over here. Mass. How do you find out mass in terms of density? So can I say this mass as half into mass is density into volume? So it is rho into V1, A1 V1 T into V2 square minus. Now why did I write this? Remember rho A1 V1 अभी थोड़ी देर पहले किए थे, क्या था? rho A1 V1 क्या था? राइट, मास फ्लो रेट, उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ना मिलेगा हम लोगों को। रेडी में और भी अगर थोड़ा सा यहीं पर स्प्लिट करके समझना चाहते हैं, A1 V1 इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट। Potential energy at mgh2, so change in potential energy will be how much? Therefore delta P will be mgh2 minus h1. Now over here also m can be written as rho A1 V1 T gh2 minus h1. Rho A1 V1 T gh2 minus h1. Clear? Now what does the conservation of energy principle state? Total energy is conserved when there is no external work done. But if there is some external work done, see over here, the pressure is doing some work. Then work done should bring about the change in kinetic energy as well as change in potential energy. So according to energy conservation, work done is equal to delta K plus delta V. अब देखो वैल्यूज डाल, वर्क डन का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने? A1 V1 P P1 minus P2 is equal to change in kinetic energy क्या निकाला है हम लोगों ने? This is change in kinetic energy half rho A1 V1 T into V2 square minus, and finally the change in potential energy is how much? Rho A1 V1 T into GH2 minus H1. GH2 minus H1. ठीक है? But ये delta V ना? V2 square minus V1 square. Delta क्या? Now, see the expression you are getting. You can clearly see that you can take something common and cancel it out from both sides. क्या common लेके cancel कर सकते हैं? Right. A1 V1 T we can take common and cancel from both sides. I get P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square plus rho G H2 minus. I'll just open up the brackets and bring the one quantity containing terms on one side and two containing terms on the other side and see what we get. Now see, if I bring all the one containing terms on one side and two containing terms on the other side, तो क्या होगा? This will be P1 plus half rho V1 square plus rho GH1, P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. This is a Bernoulli. Now, answer me a question. See, why is this whole expression important? एक छोटा सा question में answer दोनों से.
when we started off this whole derivation and I assumed the 2 points, point 1 and point 2, did I take any condition कि ये कंडीशन वैलिड होगा तभी ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट 1 बोलेंगे, ये कंडीशन वैलिड होगा तभी इसको पॉइंट 2 बोलेंगे? Did I take so? I took any point, see, any other point, any point, see, any one point is 1 and any other point is, what does this mean? This means ये जो point 1 है वो हम लोग यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, in any point, right? So what is the final statement saying? It's saying that the sum of these three quantities at the point 1 are same as the sum of these three quantities at the point 2. मतलब therefore P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. मतलब तुम कहीं पर भी ये तीन क्वांटिटी का सम ले लो, वो क्या होगा? मतलब इसमें से कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो इट विल बी डिक्रीजिंग द अदर थिंग्स, या कोई भी दो बढ़ जाएगा तो तीसरा घटना पड़ेगा। तीन जन एक साथ बढ़ नहीं सकता है, तीन जन एक साथ घट नहीं सकता है, क्योंकि टोटल का वैल्यू ऑलवेज क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। द टोटल वैल्यू हैज टू बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। इसे बर्नौलीज थ्योरम बोला जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमने बोला था ना कि वेलोसिटी बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है। कैसे? मान लो हम लोग एक पाइप ले रहे हैं जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। से दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो अगर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? V2 बड़ा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होने से वेलोसिटी बड़ा है। अब मान लो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो इसका H1 और इसका H2 इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन में से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लोग तब देखो क्या है? P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है? V2। तो P1 और P2 में से कौन बड़ा होगा? Because V2 बड़ा है ना, तो V2 बड़ा है मतलब ये वाला क्वांटिटी बड़ा है, तो ये क्वांटिटी बड़ा है इससे, मतलब ये वाला क्वांटिटी को छोटा करना पड़ेगा और ये वाला क्वांटिटी को बड़ा होना पड़ेगा। समझ आया? दैट मींस यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर राइट। इसीलिए जब भी लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है वहां पर तूफान आता है। Why? Because low pressure का मतलब है it is creating a sort of vacuum type, so it will pull the airs towards it. The same thing happens, the converse is also true. अगर velocity of air बहुत बढ़ जाता है तो वहां पर वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। Yes, all the geographical things are based on Bernoulli's theorem. স্পেসে তো পুরো এয়ার কারেন্টের ব্যাপারই থাকে না, তাহলে সেখানে আমি ঝড়ের আগে শান্তশিষ্ট হয়ে যায় না, সেটা নয়, ঝড়ের আগে শান্তশিষ্টটা হয় সেটা কেন আমি বলতে হবে, কিন্তু পুরো পয়েন্ট হয়ে গেছে মানে এয়ারটা ওই জায়গাটা স্ট্যাগনেশন করে গেছে, ওর পেছনে বাস আগের এয়ারটা মুভ করা শুরু করছে, সেই জন্য বলে ঝড়ের আগে শান্ত হয়ে যায়, পরেও सब शांत हो जाए। हाँ राइट, उसके लिए वो एटमॉस्फेरिक जो साइकिल फ्लूइड साइकिल्स होता है वो वहाँ पर पोस्ट कन्वेक्शन आता है, बहुत सारा चीज आता है। नाउ এটা একটু ঝটপট কমপ্লিট করো क्विकली। हाँ ना